Okay, in the last class we are discussing about hepatobiliary disorders, and we have been focusing on three types of divisions in hepatobiliary system. One is a disease related to hepatocytes, another is disease related to biliary tract, and third one is disease related to venous system. So in the venous system we have seen again the venous system has been divided into pre-sinusoidal, sinusoidal and post-sinusoidal. Pre-sinusoidal is again pre-hepatic and as well as intrahepatic, whereas sinusoidal, okay, only one. Then post-sinusoidal is again divided into intrahepatic and extrahepatic. So this is a figure which helps to understand this particular concept. And if you want, this is another figure where the things are explained. What do you mean by post-sinusoidal, what do you mean by pre-sinusoidal, and what is the meaning of a sinusoidal. Sinusoidal is nothing but completely related to the liver. Okay, the problems related to sinusoidal may be like cirrhosis or amyloidosis, sinusoidal infiltrations, tumor, etc. Whereas when you talk about post-sinusoidal, the commonmost disorders which cause this post-sinusoidal liver problem is congestive cardiac failure, pericardial disorders, and Burchieri syndrome. Burchieri syndrome is one of the congenital hereditary problem. Pre-sinusoidal, when we're talking, that is portal vein problems, okay, schistosomiasis, etc. So they are the one that we will see in detail. Now, if you want to understand, this is one more figure which helps to understand the concepts very, very clearly. Pre-sinusoidal, sinusoidal and post-sinusoidal. See, pre-sinusoidal is related to the intestines, okay? Intestine, from the intestine, right colic vein, left colic vein, etc. So they will come and they will drain into the superior mesenteric vein, and from the spleen here comes the splenic vein. Both these will combine together and they form the portal vein, okay? So they form the portal vein. The exactly one point is very important. The area where the portal vein is formed is posterior to the posterior surface of the head of the pancreas. Okay, this is very important. So जहाँ पे head of the pancreas है, उसका जो posterior aspect है, वहाँ पे actually ये जो veins combine होकर के portal vein बनता है, ठीक है? So इसलिए कोई भी पैथोलॉजी अगर head of the pancreas का है, तो हेड ऑफ द पैंक्रियास का जो भी पैथोलॉजी है वहाँ पे क्या होगा, आपका पोर्टल वेन कंप्रेस हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंसी ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियास, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो मैलिग्नेंसी की वजह से हेड ऑफ द पैंक्रियास बड़ा होता जाएगा एंड द प्रेशर इज फॉलोइंग ऑन द पोर्टल वेन एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन. दैट इज वन इम्पॉर्टेंट इशू. ऑफकोर्स हेड ऑफ द पैंक्रियास जो है वो बाकी भी है. हेड ऑफ द पैंक्रियास का एकदम नीचे से जो है बिलियरी ट्रैक्ट भी आता है. सो जब हेड ऑफ द पैंक्रियास बड़ा हो जाता है ट्यूमर की वजह से, तो इवन बाइल कॉमन बाइल डक्ट के ऊपर भी प्रेशर लगता है, तो वहाँ पे बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होता है और जॉन्डिस जो है वो बढ़ता जाता है ग्रेजुअली, डे बाय डे ग्रेजुअली जो है जॉन्डिस बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसा ये ट्यूमर बड़ा होता गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता गया, बाइल डक्ट जो है और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो वहाँ पे जो है जो जॉन्डिस है वो बढ़ता गया. सो एनीवे, दिस इज हाउ टू अंडरस्टैंड द प्री साइनोसाइडल एंड इन बिटवीन द हेपेटिक. ओके, सो देन द पोस्ट हेपेटिक. सी, पोस्ट हेपेटिक में एक्सपेशली एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हार्ट, सो दैट विल गो इन टू कॉज द प्रॉब्लम पोस्ट हेपेटिकली. हाउ? बिकॉज सपोज यू जस्ट इमेजिन ए पेशेंट इज देयर विद अ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है, उसका हार्ट में प्रॉब्लम है. जब हार्ट में उसका प्रॉब्लम है, तो राइट वेंट्रिकल, सपोज राइट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू पुश द ब्लड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू पुश द ब्लड प्रॉपरली, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया राइट वेंट्रिकल में. राइट हार्ट का बात कर रहे हैं हम, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया, तो वो प्रेशर जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं ना कहीं एग्जर्ट होना ही है. तो वो कहाँ पे एग्जर्ट होगा? दैट प्रेशर इज एग्जर्टेड ओवर द राइट एट्रियम. ओके, तो अब राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ गया. जब राइट एट्रियम में भी जब प्रेशर बढ़ गया तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं प्रेशर को तो जाना ही है, ठीक है. सो नाउ इट इज exerted over the two important openings which are present in the right atrium.
One is opening of inferior vena cava, another one is opening of the superior vena cava. सो जब इन्फीरियर वेना केवा में बैक प्रेशर बढ़ गया तो इन्फीरियर वेना केवा में बैक प्रेशर बढ़ता गया वी नो दैट इन्फीरियर वेना केवा इज कनेक्टेड विद द हेपेटिक वेन्स. सो अब हेपेटिक वेन में प्रेशर बढ़ गया और हेपेटिक वेन में प्रेशर बढ़ने के बाद अब लीवर में प्रेशर बढ़ गया. सो दिस इज कॉल्ड एज पैसिव कंजेशन. हम इसको बोलते हैं पैसिव कंजेशन. ए डिसीज ऑफ द हार्ट, हाउ इट मेक्स द लीवर गेट इन्वॉल्व. ठीक है. सो यहाँ पे जो है लीवर का जो, तो जब लीवर में ज़्यादा प्रेशर हो गया, बैक प्रेशर हो गया, लीवर ऑल्सो अंडरगो enlargement. Okay, passive pressure की वजह से enlargement हो गया. Now here the hepatomegaly which is occurring is because of the post sinusoidal cause. Okay, it is not pre-sinusoidal or sinusoidal, it is because of the post sinusoidal cause. Similarly, suppose the patient is having infective endocarditis. Okay, infective endocarditis is basically the problem or infective pericarditis. ओके, इन्फेक्टिव पेरिकार्डिटिस, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पेरिकार्डियम. ठीक है, पेरिकार्डियम का दो लेयर्स है, विसरल और पैराइटल, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है. तो क्या हुआ वहाँ पे पेरिकार्डियम, इसकी वजह से जो है ये इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस हो गया और पेरिकार्डियम स्ट्रेच हो गया. जब पेरिकार्डियम वहाँ पे स्ट्रेच हो गया, ठीक है, पेरिकार्डियम स्ट्रेच हो गया तो क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न जो हार्ट में वापस आ रहा है ना, राइट एट्रियम में, तो वो आ नहीं पाएगा क्योंकि पेरिकार्डियम वहाँ पे स्ट्रेच है. पेरिकार्डियम एक्सपांड होना चाहिए, है ना, उसका दोनों लेयर्स एक्सपांड जब होगा तभी जो है ब्लड जो है वापस हार्ट के अंदर आ सकता है. अब पेरिकार्डियम वहाँ पे टाइट बैंड जैसा है तो ब्लड जो यहाँ पे आ नहीं सकता है. ओके, सो अब ब्लड कहाँ पे रुकेगा? इंफ्रा वेना में भी रुकेगा. इंफ्रा वेना के वजह से प्रेशर कहाँ पे आएगा? हेपेटिक वेन में. हेपेटिक वेन से आएगा लीवर में. ओके, सो दिस इज हाउ इन्फेक्टिव पेरिकार्डिटिस or infective endocarditis or infective pericarditis which causes the involvement of the liver. Okay, so therefore post hepatic causes are most commonly related to the cardiovascular system, heart. Sinusoidal causes are most commonly related to the liver, and pre-sinusoidal causes are most commonly related to spleen, intestine, portal vein, etc. Okay, so this much we have to understand. Now almost all the same thing is explained. We know in post-hepatic, post-sinusoidal and pre-sinusoidal there are two more divisions, intrahepatic and extrahepatic. Okay, so extrahepatic post-sinusoidal and intrahepatic post-sinusoidal. extrahepatic है और post-sinusoidal है, extrahepatic है, मतलब लीवर से बाहर है, लीवर से बाहर है, मोस्टली कार्डियक प्रॉब्लम्स है. ओके, और सम ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक बर्चेरी सिंड्रोम. बर्चेरी सिंड्रोम में वो हेपेटिक वेन में ऑक्लूजन होता है, देयर इज ऑक्लूजन ऑफ द हेपेटिक वेन, सो दैट ड्रेनिंग इज नॉट प्रॉपर. ओके, दैट्स वन थिंग. इंट्राहेपेटिक लिवर से साइनोसॉइडल में नहीं है बट लिवर के अंदर ही है. ठीक है, सो दैट्स कॉमन एग्जांपल इज वीनो ऑक्लूसिव डिसऑर्डर्स, एनी ऑफ द वीनो ऑक्लूसिव डिसऑर्डर्स. सिमिलरली फॉर द साइनोसॉइडल, यस, लिवर ही इन्वॉल्व है. साइनोसॉइडल सिरोसिस, cystic liver disorders, metastatic malignant disorders, etc. About pre-sinusoidal में the common is schistosomiasis. Schistosomiasis is a parasitic infection. Schistosomiasis, sarcoidosis, and congenital hepatic fibrosis. These are some of the examples if you want. Extrahepatic pre-sinusoidal if you want, portal vein thrombosis, portal vein obstructions. Okay, some of the congenital problems, etc. I think this much of information is sufficient. So now in the hepatobiliary system we have seen three: hepatocellular, extrahepatic, and as well as venous. In the venous, sinusoidal, post-sinusoidal, pre-sinusoidal, etc. Apart from that, when you consider hepatobiliary system, we have to consider one more important thing. Okay, तीन तो हो गया, अब फोर्थ एक और है जो अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. ओके, सो हेपेटोबिलियरी सिस्टम मीन्स कंसिडरेशन ऑफ फोर: हेपेटोसेलुलर, biliary tract, venous, and as well as reticuloendothelial system. What is the meaning of reticuloendothelial system? Reticuloendothelial system means ये एक वाइड स्प्रेड सिस्टम है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह में है. ठीक है, वाइड स्प्रेड है. कैसा है? सो दिस इन्वॉल्व्स लिवर, spleen and lymph nodes. See, liver, spleen and lymph node, basically they are all lymph node organs, है ना, क्लीनिंग करने में वो है. ठीक है,
सो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस में है वो सब. सो lymph nodes, lymphatic tracts, okay, lymphatic channels, lymph nodes, spleen and liver. So these are totally called as reticuloendothelial system. Okay, make it very clear. ठीक है, so it is called as reticuloendothelial system. Now if you see in the abdominal area, तो ये सब ज़्यादा है, इधर से लिवर है, इधर से स्प्लीन है, और उसके बीच में बहुत सारे क्या है, लिम्फ नोड्स है, वहाँ पे पेयर्स पैचेस है, ऊपर से ओमेंटम है, मीसेंट्रम है, बाकी लिम्फेटिक चैनल्स है. तो ये सब मिलके जो है एक बनाता है रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम. तो ये दे आर इंटरकनेक्टेड, एक्चुअली दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ओके, सो नाउ इफ देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर, स्प्लीन, there will, in case of reticuloendothelial system, what happens if the reticuloendothelial system is involved, basically मतलब आपका जो है ये lymphatic channels है, lymph glands है, तो ये सब इन्वॉल्व है. ठीक है, so then there will be enlargement of the liver, spleen, क्योंकि liver और spleen जब lymph node में इन्फिल्ट्रेशन हो गया, कोई भी डिसीज है, फॉर एग्जाम्पल टेक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम डिसऑर्डर इज ल्यूकेमिया. ठीक है, ल्यूकेमिया. ना ल्यूकेमिया में लिम्फ ग्लैंड में इन्फिल्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद जो है इन्फिल्ट्रेशन चलेगा स्प्लीन में, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन होगा लिवर में, तो वन बाय वन वो इन्वॉल्व होता गया. सो व्हाट यू गेट इन केस ऑफ रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम डिसऑर्डर इज लिवर, स्प्लीन इज गेट इन्वॉल्व, बट देयर इज नो एसाइटिस. एसिफ एसाइटिस नहीं है, क्योंकि वीनस सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेटर स्टेज में मिल सकता है, पहले नहीं है. नो एसाइटिस एंड देयर इज नो जॉन्डिस. Okay, so this is one condition where liver is enlarged without jaundice. Spleen is enlarged without jaundice. Liver and spleen are involved without much pallor. Pallor बाद में हो भी सकता है. So much pallor. So this indicates towards what you say reticuloendothelial system. Now one of the common example is leukemia. Another common example to make you very clear, it is abdominal tuberculosis. Okay, abdominal tuberculosis is basically a disease of the reticuloendothelial system. तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन के जो लिम्फ नोड्स है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और उसके बाद में लिवर भी इन्वॉल्व होगा, स्प्लीन भी इन्वॉल्व होगा. ठीक है, बट इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यू कैन नॉट फाइंड एनी एसाइटिस. ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो है आपको एसाइटिस नहीं मिलेगा. ओके, एंड देयर इज नो जॉन्डिस. Okay, there is no much pallor. So this is thing. So there will be only infiltration, and this leads to swelling. Okay, this leads to swelling, abdominal tuberculosis, then leukemia, lymphoma. So these are some of the examples of reticuloendothelial system. So when you look into hepatobiliary system, always your approach should be these four things. ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, नहीं तो आप कहीं आपका जो अप्रोच है कहीं और चला जाएगा. Okay, so this is about the reticuloendothelial system. Now